both of us have a very similar background, yeah. Middle class families, based in Bihar. I think the one way out for our parents, like to break out of that circle, was education. Me, that I was not myself, and he said कि यार तुमको करना क्या है, मतलब इंजीनियर बनना है ना। आईटी से इंजीनियर वाले इंजीनियर होते हैं क्या, बाकी लोगों को इंजीनियर का तक ये नहीं मिलता है। होते तो इंजीनियर ही हैं। तो जहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो जाके अच्छा इंजीनियर बन जाना, इसमें क्या जरूरत है, आईटी से ही करना थोड़ी जरूरी है। हाँ। मैंने कहा यार पॉइंट तो सही है आपका। तो कैसे हुआ वो तो मतलब हो गया, मतलब आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब आई वेंट थ्रू द एंटायर प्रोसेस, आई ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड डिसेंटली वेल फॉर इट, बट नाउ आई थिंक आई कैन एक्चुअली कोडिफाई इट, because like everything else in Google, even interview process is does not have a lot of subjectivity. So that's the general grouse that I have, right? That people come into this industry saying कि यार मैं आज 100 रुपए डालूंगा, कल 1 लाख रुपए लेके लेके जाऊंगा। हाँ। It's not a get rich quick scheme. I mean, तो हाय एवरीवन, आज के सेकंड पॉडकास्ट विद ट्रेल ब्लेजर मेरे साथ मेरे मित्र हैं कौटिल्या। कौटिल्या पटना से आते हैं। हमने साथ में आईआईटी रुड़की से 2008 में ग्रेजुएट किया है। कौटिल्या उसके बाद आईआईएम कैलकटा गए थे। उसके बाद इन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन में काम किया है, उसके बाद गूगल में काम किया है, और अभी कॉइन डीसीएक्स में वीपी ग्रोथ हैं। काफी कुछ अचीव किया है कौटिल्या ने अपने करियर में। मतलब एक आइडियल रिज्यूमे जो होता है, वैसा एक आइडियल रिज्यूमे बनाया है कौटिल्या ने। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं और किस तरह से हम भी एक आइडियल रिज्यूमे बना सकते हैं। हम भी अपने करियर में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। वेरी वार्म वेलकम टू योर कौटिल्या, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। तो कौटिल्या, आई थिंक सबसे पहले तो हम आपके ना अर्ली लाइफ से शुरू करना चाहेंगे कि आपकी अर्ली लाइफ कैसी थी, आप कहाँ पे पले बड़े, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा था, उसके बारे में बताइए। no, first of all, thanks for having me over. It's also a good chance for us to connect. But and more importantly, I don't think I've got an ideal resume. uh, uh, I think I've gone with the flow. I don't know whether all the calls have been correct or not, but चलिए चल रहा है. It's a good journey. Yeah. Now starting with the coming to your question, I think both of us have a very similar background. Yeah, middle class families, based in Bihar. I think the one way out for our parents, like to break out of that circle, was education. They bet big on education. They kept everything on the side, and they ensured that everyone in the family, as I said, like we have very very similar backgrounds in that sense, right? So my dad is in government job. He actually retired this year in January. Okay. Bihar government job. So for him, it was very clear. Dad and mom were very clear कि यार we'll keep everything on the side. We might not have family vacations, etc., etc., but we will give best in class education to all our children. Okay. Okay. So me and my two sisters went to, I think, one of the better schools in Patna, because we were good in maths. At least I was good in maths. So obviously, you're good in maths, you take PCM and you become an engineer. Yeah. So I think education was the bet that the parents took, and hopefully it has just delivered. worked out. Yeah. It just बट worked out. मतलब आपके आसपास जो आपके रिलेटिव्स थे, आपके जो या क्लोज रिलेटिव या फर्स्ट या सेकंड सर्कल में जो लोग थे, वो लोग काफी एजुकेटेड थे या दे वर लाइक स्ट्रगलिंग? क्या सिचुएशन था वैसा? मतलब यू हैड सम इंस्पिरेशन अराउंड यू? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो इंजीनियर बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं, उनके मामा चाचा जो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सर्कल होता है, वहां पे भी ऐसे लोग होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जो गाइड करते हैं। आपका भी वैसा ही माहौल था या कुछ अलग था? यार वैसा मतलब I don't remember. I don't think there is anyone else in my family who is into IIT. That's for sure. Okay. There were a few engineers, but I think a lot of drive also came from the family situation. I don't think it was external. A lot of it was very very internal. अच्छा. Which was like यार कुछ करना है. You have to do well. You have to grow. I think it was always positive, but it was always driven. ऐसा नहीं था कि इट वॉज नॉट नेगेटिव इन द सेंस कि हे तुम अच्छा नहीं कर रहे हो और तुमको कुछ बड़ा करना है, एंड दैट्स व्हाई यू मूव आउट। लाइक अभी जहाँ है वहां से आगे बढ़ना है, एंड द वे टू डू इज जस्ट बी गुड एट एजुकेशन।
आपका आईआईटी क्रैक करने का प्रोसेस कैसा था? आपने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया या आपने ड्रॉप किया? लाइक वो वाली कहानी बताइए, कैसे आपने आईआईटी क्रैक किया, और आपने मतलब पटना में रह करके क्रैक किया या कहीं और गए, क्या क्या मतलब हाउ वाज द प्रोसेस? So, as I said, right, we didn't have a lot of kind of guidance, etc. Right? तो एक तो पटना से बाहर निकले नहीं, पटना में ही थे. First 2 years, so at that time, एंड जस्ट टू ऐड टू इट, आई थिंक उस समय पटना का जो माहौल था वो काफी गलत था। मतलब जो प्रोफेसर्स थे उनके पास अगर आपको पढ़ने जाना है तो गुंडागर्दी थी बहुत सारी। मुझे तो yeah, पता है, आई थिंक एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे उस समय जिनका मर्डर हो गया था, आई थिंक 1-2 साल बाद। yeah. तो वो माहौल ही बहुत ही गंदा था उसमें। आपने मतलब, या तो मतलब वो भी आप मुझे बताइए कि कैसे आपने पटना में तैयारी की इस माहौल में। Well, माहौल तो मतलब आदत पड़ जाती है. It's like once you are a part of that system, you kind of understand how to survive. But तो one because guidance नहीं था, तो as I was saying, right after 10th, I was decent in maths, अच्छे नंबर आ गए थे, तो that was like वहां से आईएससी करो. आईएससी एट दैट टाइम इंटरमीडिएट इन साइंस होता था. वी डिडंट हैव +2. वी हैड +2, बट या दैट या वाज लाइक वहां से आईएससी करो जहां से मैं करना चाहता था और नहीं कर पाया. या So I joined science college, पटना Patna पटना Science साइंस College. कॉलेज गया, ओके। Yeah. Dad wanted to join Patna अच्छा, Science यू College. पटना साइंस कॉलेज I went ऑल्सो, to Patna Science वाओ। College, yeah. ओके। So Patna Science College से IISc करने गया. Not that it was like the best place for जे cracking IIT, जे right? या It was या not, या because Patna Science College में actually attendance enforce करते थे उस समय. ओके ओके So first year, actually first and second year, you won't believe, from 6 a.m. in the morning to 7:30 in the evening, I used to be outside. So ओके साइकिल लेके निकलता था, एक कोचिंग करता था, क्लासेस करता था सारे साइंस कॉलेज में, फिर बाहर जाता, फिर एक और कोचिंग करता था, फिर घर वापस आता था. तो obviously first year was like crazy hectic. I mean, so I didn't crack IIT in my first attempt. ओके And I had a decent rank in this thing in CBSE, ओके। and I was like actually sitting and brooding. I still remember that, by the way. क्या क्या Uh, रैंक आया था उस समय? I really don't remember. आईआईटी का रैंक याद है क्या? IIT, so I cleared screening. I didn't clear mains. अच्छा, ओके, बट So यू वुड हैव सम रैंक और देयर वाज नो रैंक गिवन? I don't remember the अच्छा, rank. I ठीक was है, ओके। इट्स लॉन्ग अगो यार, इट्स लॉन्ग अगो। 14 years, right? Maybe more. Actually, या more. 2004, या इट 2003. इज 2003, 19 years. 19 years नहीं याद होगा। There's मुझे no याद है, chance. मुझे याद है। सो आई थिंक द So, ईयर आई डिड नॉट क्लियर, आई मेरा स्क्रीनिंग हो गया था, मेंस में रैंक कुछ 5000 आया हुआ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा. सो आई डिड नॉट गेट एनी I सीट दैट don't remember at all. But I do remember that, and imagine, मुझे रैंक याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है. मुझे याद है कि हाँ डिसेंट था सीबीएसई में. आईआईटी का मेंस नहीं हुआ था. एंड आई वाज सिटिंग एंड लाइक रियली ब्रूडिंग कि यार क्या है. आई रियली फेल्ड. या एंड or the question was, did I fail, or what should I do, right? What should I do next? And that's when my dad like was also sitting, and he noticed me that I was not myself, and he said कि यार तुमको करना क्या है, मतलब इंजीनियर बनना है ना. आईआईटी से इंजीनियर वाले इंजीनियर होते हैं क्या? बाकी लोगों को इंजीनियर का तक ये नहीं मिलता है. होते तो इंजीनियर ही हैं. तो जहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हो जाके अच्छा इंजीनियर बन जाना, इसमें क्या जरूरत है? आईआईटी से ही करना थोड़ी जरूरी है. हाँ। मैंने कहा यार पॉइंट तो सही है आपका. तो कहते हैं ठीक है, एक चांस और ले लो इफ यू रियली वांट आईआईटी, बट आई डोंट थिंक इट्स क्रिटिकल दैट यू क्रैक आईआईटी एंड ओनली देन बिकम एन इंजीनियर. इंजीनियर बनना है कहीं से भी इंजीनियर बन जाओ. तुमको वहां जाके इंजीनियरिंग अच्छे से करनी चाहिए. नॉट दैट आई फेल्ट ट्रू टू दोस वर्ड्स, बाय द वे. आई वाज नॉट अ वेरी गुड इंजीनियर, बट इट्स ओके. But at least it gave that confidence that hey, folks have your back. It's not like you will be thrown out. You get that confidence, right? वो यस internally आता है, belief आता है कि यार या ठीक है, नाउ आई एम कंफर्टेबल, मेरा बैक जो है वो सुरक्षित है. आई डोंट हैव दैट इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर, सो आई कैन गिव इट माय बेस्ट शॉट. pretty much सेम ही होता मेरे साथ भी। तो जैसे हाँ, मेरा क्लियर नहीं हुआ था, आई वाज लाइक वेरी सैड, ऑलमोस्ट सुसाइडल। हाँ. ओ वाओ, एंड ओ एंड माय गॉड. देन जब मैंने पापा से बात किया तो पापा ने बोला कोई नहीं यार, अगले साल दे देना। और मैंने कहा सही में, मतलब इतना लोड क्यों ले रहा हूँ इतना क्यों टेंशन हो रहा है? मैं? या तो एंड इट गिव्स यू दैट वो फीलिंग आता है यस ना, सडनली बिकम पॉजिटिव कि या यार टेंशन क्या है, मतलब या इंजीनियरिंग बनना है ना, कहीं से बन जाएंगे, क्या या दिक्कत है. या तो और हो गया अगली बार. हो गया, तो मैंने कहा चलो फिर अभी ठीक है, सेट है. सो आई थिंक अगर अगर बहुत लोग गाइड करने वाले होते
तो शायद मे बी आई वुड नॉट हैव जॉइंड पटना साइंस कॉलेज, राइट? Hmm. बिकॉज आई न्यू दैट आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे आईआईटी करना Yeah. है. इट्स नॉट लाइक आई हैव टू डू Yeah. अगर मुझे साइंस में आगे बढ़ना पड़ता, पीएचडी करनी होती, तो साइंस कॉलेज वाज लाइक रियली Yeah. द Yeah. Yeah. प्लेस, राइट? बट मे बी नॉट द राइट, बट ठीक है, आई थिंक इट्स आई थिंक ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी. वो एक बड़ा चैलेंज होता है आई थिंक स्पेशली बिहार से जो लोग आते हैं हम लोग जो और जनरली मैं देखता हूँ आजकल कॉर्पोरेट इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बिहारी जो है वो कॉर्पोरेट इंडिया में है, बाकी लोग देश छोड़ के जा रहे हैं. वी आर द वन हु इज बिल्डिंग द नेशन बाय द वे टू मेक दैट टॉल क्लेम. Cheers to that. ऑफ कोर्स यस टू दैट. तो सो या आई थिंक जनरली वो बैकग्राउंड होता नहीं है, इसलिए आई थिंक हम कॉलेज और चले जाते हैं. तो बट हाउ हाउ आर यू एबल टू सॉर्ट ऑफ सॉल्व फॉर इट कि मेंटली आपने कैसे डिसाइड किया कि एक और अटेम्प्ट लें, और कैसे यू आर एबल टू फाइनली क्रैक इट? कुछ और लाइक सम अदर प्रोसेस यू हैड कि इसने कर लिया तो मेरा हो जाएगा, लाइक व्हाट वाज द मेंटल मॉडल दैट यू आर यूजिंग टू क्रैक जेई? Wow, I mean, interesting question, but it does remind me of. So you're right. I think it does help when you see people around saying कि यार जिनका नहीं हुआ है मेरे साथ, some of them are like way smarter than me, Yeah. और जिनका हो गया है मेरे ईयर Yeah. में, I can like I know that I'm better than them Yeah. on any given day, right? And by the way, it holds true across all competitive exams. At the end of the day, I think and that realization happened after the first failed attempt, which is cracking competitive exams is essentially about having a couple of good days, nothing Yeah. else. Yeah. And you would see people around you, right? Like Yeah. really smart fellows. Any day, one of the most, I mean, if you do the IQ test, etc., they'll be ahead of us in that sense. But they failed at getting into Yeah. those right Yeah. colleges or Yeah. right campuses. Yeah. And there are people around you who are just there by the strength of their willpower and their confidence, nothing else. Yeah. Like they're so confident. होगा मेरा तो हो गया हाँ, उनका, मतलब right? मेरा मेंटल मॉडल तो ये था यार कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, राइट? मेरा हो नहीं रहा है मेरे से, मतलब मैंने देखा लोगों का निकल गया, स्क्रीनिंग में निकल गया और सब कुछ हो गया और मेरा नहीं हो रहा है. तो नॉट आई मीन आई डोंट नो, मतलब बट दिस काइंड ऑफ हेल्प मी हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार होना तो है ही, राइट? इट्स जस्ट अबाउट ट्राइंग, जस्ट अबाउट पुटिंग द रेप्स, एंड व्हिच फाइनली हेल्प मी. तो फिर आप आईआईटी में गए, और फिर आईआईटी में जाकर के आपको सो फार जो आई थिंक अपब्रिंगिंग थी, आपको इंजीनियर बनना था, उसके बाद आप आईआईएम कैसे पहुंच गए, राइट? और तो आई थिंक वो जर्नी कैसे थी? और जनरली आई थिंक बहुत सारे लोग एमबीए ना, मतलब जिस तरह से आई थिंक थोड़े साल पहले इंजीनियरिंग और डॉक्टरी, आई थिंक यही दो चीजें हुआ करती हैं. आजकल एमबीए बन के वो आ गया है, और लोग कहीं से भी एमबीए कर रहे हैं, कोई भी एमबीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं. तो एमबीए पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपने एमबीए क्यों किया, और किसको रिकमेंड करोगे कि एमबीए करना चाहिए? अच्छा, दो अलग अलग सवाल है. हाँ, दो अलग अलग सवाल. तो पहला वाला पे आते हैं पहले कि हाउ डिड एमबीए हैपन आफ्टर आईआईटी. तो यार वो 4 साल आपको बहुत अच्छे से पता है आईआईटी में कैसे रहे थे. नहीं, लोग भी जानना चाहेंगे 4 साल कैसे. So the first things that, by the way, that hit you when you join campuses like IIT is that आप कुएं के मेढक थे. once you reach those places, you realize कि boss, there are so many smarter people than you around you, right? And it's a good thing and a bad thing, right? I mean, many people actually take it positively, that hey, I have to work all the more harder. I have to ensure that I find a niche for myself where I can kind of really crack it. Some people actually go the other way, where they become very defensive, that hey, Yeah. where have I come? Yeah. Thankfully for me, it was the other way around, which is like मजा आ रहा है, अच्छे लोग हैं यार, इनके साथ इंटरेक्ट करने में मजा आ रहा है. इट्स गुड फन. Yeah. एमबीए का तो पता भी नहीं था बाय द टाइम आई जॉइन आईआईटी. या आईएम क्या होता है, अगेन स्मॉल टाउन, राइट? आई मीन आईआईटी कर लिया, खुश है. Yeah. तो आने के बाद पता कि अच्छा एमबीए करके कुछ होता है, और एमबीए में आईआईएम करके कुछ होता है, राइट? सो I don't think I had considered MBA till beginning of third year. Okay. I started considering MBA from my internship in third year. Okay. You won't believe. Not before that internship in third year, I'd not even thought about Okay. MBA. Okay. तो लाइक यहाँ की कोर में करना है, अच्छा करना है, इंजीनियर डिसेंट ठीक ठाक नंबर आया रहता था, इंजीनियर भी ठीक ठाक बन जाएंगे. But then from the internship third year, because again the noise around you, everyone is talking about this, like यार मुझे भी करना है, मैं भी मतलब ट्राई तो करना है, कैसा होता है देखेंगे.
So that's where at least the thought आपको started. लेकिन फ्यूचर पता था कि एमबीए करने के बाद जो जॉब्स होंगे वो डिफरेंट होंगे इंजीनियरिंग से, ऐसा मेरा कुछ? लॉजिक अलग था, मेरा ओके। लॉजिक था कि यार देखो, इंजीनियरिंग में नंबर तो आ रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई वुड वांट एंजॉय डूइंग इट डे इन एंड डे आउट। ओके। दैट्स नंबर वन। हम्म। एंड मेरा सो दिस तो आई नो आई विल नॉट एंजॉय डूइंग डे इन एंड डे आउट। दूसरे का पता नहीं है आई माइट एंजॉय डूइंग डे इन एंड डे आउट, सो करके देख लेते हैं। गॉट इट, गॉट दैट इट, वाज द रैशनल। गॉट इट। सो आई थिंक ये आई थिंक समझना जरूरी है कि आप जो कर रहे हो, आपको आई थिंक 4 साल में कम से कम समझ में आना शुरू हो जाता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ हाँ, रहा है कि रोज नहीं आ कर सकते हो कि नहीं, रोज रहा। मतलब एवरी डे, मॉर्निंग से इवनिंग, इफ यू आर हैविंग फन, एंड देयर आर पीपल हु आर, या राइट, एंड वो लाइक doing really ऑफ good job कोर्स, over ऑफ कोर्स, there, या some of our या classmates themselves, right? या But I mean the point is आपको मजा आना चाहिए। if you're not having fun, then you'll not do well. It's as या simple as that. या या तो कहीं भी कभी भी it holds true, right? So for me at least, I realized that I didn't want to be there. I didn't know whether I would love being doing an MBA, and then afterwards what will happen. But ये पता था कि ये नहीं करना है, तो इसलिए MBA का सोचा। फोर्थ ईयर में आई थिंक बाय this November, December, slum had come, right? हाँ Somewhere around that time. या So I got through, I don't know how, but I got through in Schlumberger. So job का टेंशन खत्म हो गया बिल्कुल। जॉब का टेंशन खत्म होने पे आई थिंक इट, एंड that is why I firmly believe in the fact that cracking competitive exams is a game of confidences. IQ and preparedness comes, but it's at the end of the day, it's a game of confidence. या I cracked MBA just basis my confidence. Like क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो slumber है मेरे पास। I'll go there, it's fine. तो कोई टेंशन नहीं, बिना किसी टेंशन के आई वेंट एंड गिव द रिटर्न। दो जगह से कॉल आया, कैल और कोजिकोडे। ओके। एंड इंटरव्यू तो उससे भी ज्यादा था, इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं किया है, बात करके आते हैं देखा जाएगा जो होगा। तो ओके। बहुत जगह ऐसी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हुए and दोनों जगह से फाइनल कन्वर्जन भी आ गया। ओके। उसके बाद was the difficult part because Schlumberger was paying a ton Exactly. of So I money. was about to ask, like getting placed Yeah. in the sort of best campus job, and slum to matlab like it's a dream job for everybody. At least it used to be like so many years ago. तो वो कॉल कैसे लिया आपने कि मतलब श्लम जाए या एमबीए करने जाए? लाइक मुझे याद है, आई थिंक हमारा भी डिस्कशन उस समय हुआ था, और आई थिंक आई वुड हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपने कैसे डिसाइड किया? लाइक इट इज लाइक आई थिंक अ वेरी वेरी टफ कॉल. I'll be upfront with you. I And still and don't know. especially I think us who are coming from Bihar, जो mostly I think I'll probably take the liberty to say this कि for every Bihari कि we are mostly driven by कि पैसा कहाँ पे क्या मिल रहा है, हाँ, right? जरूरी है। Right, What? very very maybe I think उतना long term नहीं देख पाते, but वही देख रहे होते हैं हम. Simple. तो कैसे decide किया आपने ये? That's the thing. I'll be upfront with you. I'm still not sure whether that was the right call. Okay. After 12 years, 14 years, I'm still not sure whether that was the right call that I had taken. But so basically, two unslept nights, multiple conversations, including with so many with friends, so many with family, because उनके लिए भी obviously it was a critical factor. Some with a few other, I mean, people who were actually in the corporate world, at least outside, talking to a few people. I think it finally came down to the fact कि मुझे at any point of time MBA करना है कि नहीं करना है, and the answer in my head was कि यार करना तो है, this is something that I want to do after whatever kind of I've come to know from people around me. ये करना तो है, that's number one. Number two, I also researched a lot about the kind of work that Schlumberger was doing, right? And I realized कि यार यहाँ पे भी ना शायद, I didn't know obviously, but शायद मैं बहुत लंबा नहीं रुकूंगा। तो I was like यार अगर वैसा है then I might as well kind of अगर मैं बहुत लंबा बेट नहीं ले रहा हूँ स्टम्बल के साथ, then I might as well do something which I know I want to do in the future. I intend to do in the future. So that was the final deal breaker. But it was a very, very difficult call. Very, very difficult. No. Yeah, it was really difficult. But I think what I'm understanding here is कि I think whenever in life you had like two options. One option is like at least one option is like vague, foggy. The other option is like कि ये तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है करने में. You basically go with this Yeah, foggy that thing, and ambiguity. then you go and ahead and sort of explore. I think थोड़ा explorer mindset है You will आपका. see that repeated multiple times. Yeah. So उसके बाद I see you get placed in Johnson and Johnson, and then you went to Google.
तो अपने अपने इस करियर के बारे में बताइए कि जॉनसन एंड जॉनसन में एक्सपीरियंस कैसा था। गूगल क्रैक करना, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है यार कि आई थिंक गूगल में जाना चाहते हैं। गूगल गूगल ऑलमोस्ट एक ऐसी कंपनी जैसा लगता है कि वहां पे अगर चले गए तो अब तो रिटायर कर देना चाहिए वहां पे, राइट? कि जनरली एटलीस्ट व्हाट वी हियर कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जिस तरह का काम है, जो क्वालिटी का काम है, आई थिंक जो वो तीन बेसिकली अगर मैं वो ट्रायंगल बनाऊं उसमें बोलूं कि वर्क क्वालिटी, मनी एंड work life balance, right? I think that will probably fit in really really well for Google. तो ये ड्रीम जॉब कैसे क्रैक किया? आई वुड से probably Google is here as compared to slumber. ये कैसे क्रैक किया? एक सवाल रह गया वैसे, बाय द वे, द एमबीए वन, हाँ, बट yeah, sorry. सो यू वांट मी टू कवर दैट? Yeah, we can go ahead with the MBA अच्छा question. अच्छा अच्छा. Yeah. सो यार, एक्चुअली लेट्स टेक द एमबीए बिट फर्स्ट. करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई थिंक आई दिस इज समथिंग दैट, by the way, a bunch of folks who have joined my team also asked me this question, that or they have this thing that hey, MBA करना है मुझे. I think times have changed from where we were to where we are right now. So at that time, right, MBA was at least now I've got a slightly clearer idea about it, right? MBA is just a signaling tool. Yeah. What it does is so to a bunch of industries like investment banking, consulting, even FMCG to an extent, right? Private equity, it gives you a signal that hey, these guys are good, number one, and they're slightly different from the masses, right? तो एक basic level of job जो है वो उनका entrance test उनके लिए कर देता है, Yeah. राइट? IIMs का entrance test and interviews etc. So they know कि हाँ एक certain quality of audience आती है, और फिर वहाँ पे वो आपका CGPA वगैरह के बेसिस पे they also know कि इस crowd में ये they are at least standing apart. So they use MBA as a signaling exercise, and hence they prefer to hire from MBA colleges. If people want to get into those industries, then MBA helps, obviously. MBA has its value. Yeah. Again, at that point of time, we didn't have too many options, right? I mean, ऐसा 2000 and 2022 में बहुत फर्क है. Yeah. In terms of number of employment opportunities available to new graduates, right? I wish we were passing out at this in this year, but there's a lot of difference, and there's a lot of opportunity available now which were not available then, and then hence MBA लोगों के लिए was the obvious route. I think now it's important for you to understand, for at least folks to understand कि यार उनको करना क्या है. अगर outside of these three industries, if you really want to kind of अगर श्योर हो कि हाँ फिनेंस में नहीं घुसना है या फिर कंसल्टिंग में नहीं जाना है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, वो लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ ये इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री में डेप्थ बनाना है एटसेट्रा एटसेट्रा, देन आई थिंक द वे टू गो इज ट्राई आउट मल्टीपल थिंग्स बिफोर you actually do it. You might realize that you don't need an MBA. Yeah. There are so many people who have met in the last 12 years who are not MBAs but are exceptionally good at their jobs. MBA का, as I said, एक तो आपका इंडस्ट्री फिल्टर करना ही होता है, दूसरा देयर इज अ बेनिफिट व्हिच यू काइंड ऑफ बिल्ड अ नेटवर्क. नेटवर्क स्ट्रांग बन जाता है, बट देन यू कैन बिल्ड दैट नेटवर्क इन योर वर्क लाइफ एज वेल if you are inclined that way. It's a skill set. It's not like anyone is born with it. It's a skill set that you can train yourself to become good at. तो एज आई सेड, थोड़ा अभी आई थिंक थोड़ा वो बैलेंस्ड अप्रोच लेना एंड रियली थिंकिंग थ्रू व्हाई एमबीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज वेरी a strong incrementality that comes from, in many cases actually, outside of few IIMs etc. If you actually calculate the ROI, it doesn't make sense. It does not make sense. It doesn't make sense at an ROI level. So thinking through क्यों करना है, what is the value that it is making, and whether it is solving for your ROI use case or not. In some cases ROI might not be relevant, and it's okay, right? अगर ROI आपके लिए नहीं relevant है तो जो ठीक है, but if you are thinking from an ROI mindset, then you really need to kind of evaluate whether you need it or not. मुझे लगता है एक चीज और जो MBA हेल्प करता है, जो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए MBA डिग्री लें, बट आपको जैसे अगर हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे IIT से, तो हमें इंजीनियरिंग का सेंस था, हमें बिजनेस का सेंस नहीं था कि फाइनेंस कैसे वर्क करता है, HR कैसे वर्क करता है, मार्केटिंग सेल्स कैसे वर्क करता है, वो सब चीजें नहीं पता होती हैं. शायद उसका एक थोड़ा सेंस जो है आपको MBA करने में मिल जाता है. You are right, but वो 2 साल आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लो तो ऐसे ही सीख जाते हो. वो बात भी है. मैं भी सेम चीज पे अग्री करता हूँ. जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था एक बैटरी कंपनी में, प्रीटी मच सीडो MD की तरह काम कर रहा था,
तो आई हैड एन एंटायर सेंस ऑफ You learn any which way. कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है Correct. वो तो समझ में आ जाता है. Got it. Got it. Now we'll jump on to the हाँ. question on Google. Google. कि ये Google वाली चीज बताइए कि ये कैसे क्रैक किया आपने? So let's come to the first. The first part is why Johnson to Google, हाँ. and then Yes. how Google. Yeah. तो बढ़िया है, आपने अच्छे क्वेश्चन का ट्रैक रखा हुआ है. यार जॉनसन टू गूगल तो यार डिफरेंट है, मतलब फॉर मी 6 साल हो गए थे जॉनसन में. आई एम स्टिल नॉट श्योर वेदर I actually overstayed my welcome there. I still think that a couple of years before would have been better. But I think the good thing about any FMCG company is it gives you, so for me, right, in any job, again, it's for me. And that's why I'm reiterating that, because everyone has their different journeys, right? It might not be relevant for everyone else. But for me, I think it is important that when I'm in a job, I learn new skills and learn new things, right? At least every day that I am getting up and doing something, it should not be like I should be taken for granted. ये तो मुझे आता है, ये तो क्रैक कर दूंगा मैं. जैसे ही मैं सिचुएशन आने लगता है ना, मुझे लगता है कि यार अब कुछ अब नया करना है. सेम दैट यू आर सेइंग, राइट? एक्सप्लोरर माइंडसेट. मैं बोर हो जाता हूँ अगर अगर मुझे सक्सेस भी गारंटीड है ना, तो मैं उससे बोर हो जाता हूँ. Exactly. गारंटीड सक्सेस डज नॉट excite me. तो so in Johnson I did 2 years of marketing, 2 years of hardcore sales. I was actually managing AP, Telangana and Rayalaseema when the state was getting divided. So 2013-14. Okay. And then I went back and did 1 year of sales strategy where I was working on mergers and acquisition of a new brand that Johnson had acquired. And then 1 year of again core marketing on Johnson's baby. So this is kind of my this thing. But essentially what happened was after 5-6 years I was like done ki jo core skill sets the वहाँ सीखने को, I had done those that work, right? And thankfully someone in Google reached out to me saying that hey, we've got a vacancy in the account management position for CPG vertical. CPG is FMCG. Yeah. So आप FMCG clients को handle करोगे. So imagine I was a marketeer. So जो basically selling to marketeers the digital ad products, right? Yeah. That was the role. मैंने कहा कि यार मतलब continuation of skill set है, and there's something entirely different that I'm learning, right? Because what happens in this case is the side of the table changes. You are a buyer when you're a marketeer, and then suddenly you become a seller, and you are selling to marketeers, right? So it's a different, very different skill set that you need to learn for it. तो मेरे लिए exciting था. मैंने कहा चलो करते हैं. So that was how the at least the call happened for me कि हाँ ठीक है, this is something that I can take up. Now cracking Google, that's a उस समय तो कैसे हुआ वो तो मतलब हो गया, मतलब I don't know, मतलब I went through the entire process. I obviously prepared decently well for it, but now I think I can actually codify it, because like everything else in Google, even interview process does not have a lot of subjectivity. They have actually made it very process driven, very rigorous, which ensures that your biases as an interviewer does not come in the way of hiring a candidate, right? But because it is very codified, because it is very structured, it can be hacked. It can be hacked. Okay. Yeah, I mean, the way to hacked maybe is the wrong word, but maybe it can be cracked. There is an algo to kind of like ensure that you can do well in the interviews. You obviously need to have certain level of a performance, certain level of understanding, certain level of kind of IQ to be able to get through the interviews. But the process is very rigorous, and process does not vary too much unless and until they can come up with a new, completely new hiring process. So there are like 3 or 4 things that they kind of evaluate you on, right? The first one is obviously काम क्या है, हाँ तो हमारे पास काम क्या है और आपने काम क्या किया है, and whether there is some synergy over there or not, right? So वो तो I'm guessing more often than not people know कि हाँ, and over there also I think preparing well always helps, right? कि read about the role that there is an opening for, talk to a few people who are doing that job, understand the challenges that they are facing, and build those journeys from what you have been doing till now. Call out those challenges up front. Tell your interviewer that hey, इस तरह के challenge को मैं ऐसे face करता हूँ. This is how I've succeeded at it, etc., right? So I mean, like anything else in life, preparing well always helps. But so over here also you can actually prepare well, talk to few people so that you understand कि आप किस चीज के लिए जा रहे हो, वहाँ क्या क्या core challenges हैं, अभी लोग डे इन डे आउट जॉब क्या करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो टीम में, एंड देन यू एसेंशियली ट्राई एंड सी इफ यू कैन एक्चुअली you have some stories, you have some instances where you have solved for those challenges or those problems, right?
whatever parallels you can build. Yeah. So that is very, very core role related knowledge. The second one is simple आपका cognitive ability. So in IIT we didn't used to do it. In MBA, whoever is doing MBA, they'll realize we used to solve case studies. Yeah. Right? So case study solve करने का ना एक बड़ा structured process होता है. तो cognitive ability is nothing but solving for hypothetical situations or case studies, right? तो उसमें आप मतलब basically how, and again this is not something which is rocket science because it's like really codified. Consulting companies ने तो मतलब obviously इसके ऊपर masters कर रखा है, right? So it's out there. You can actually prepare for it. Like so that you know that whatever new question left of the field question that comes your way, if you follow that structure, you will not go off. You'll not kind of spread yourself thin, right? You will still be able to arrive at something. It might be right or wrong. That obviously is basis your how you are approaching the problem, but you will at least have the right structure in the approach to it. So that is cognitive ability. Third one is leadership. Leadership बहुत critical होता है because these organizations ना, while it does look really really big, right? But when you go in, you actually have got a lot of kind of scope to do work, right? It depends on you कि आप कितना अपने प्लेट पे लेते हो, आप कितना इम्पैक्ट ड्राइव करते हो. तो उनके लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो लीडरशिप इज अनदर स्किल सेट दैट people are tested on, right? कि आप unknowns में कैसे घुसे, आपने I mean when places or instances where you picked up things which are not really your own scope, when you helped out your colleagues, when you helped out your team members, sometimes when you actually reached out to cross-functional folks, etc. So leadership कैसे crack करते हो? And the last one is culture. So generally ये 4 या 5 चीजें, I think it holds true for all फैंग कंपनीज की ये 4-5 सेक्शंस आप अगर कवर करते हो ना अच्छे से, and again if you prepare well, generally you should be able to go through the entire process. got it. तो मतलब आपके, अगर मैं so far I think, और आपके most recent जॉब में वो भी आएंगे, बट अगर आपके करियर पे so far अगर मैं देखूं तो 2-3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने आपको लाइक हेल्प किया सक्सीड होने में, गूगल जाने में या जॉनसन जॉनसन क्रैक करने में, IIM जाने में, और IIM अगर मैं छोड़ दूं, जनरली करियर ले लूं, जॉनसन एंड जॉनसन में का करियर, आपका गूगल का करियर, तो जैसे मुझे लगता है कि एक चीज है कि कॉन्फिडेंस काफी है, जो मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, और मुझे लगता है आपकी इंग्लिश के ऊपर पकड़ काफी अच्छी है. तो मतलब इससे आप अग्री करेंगे, और आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि और क्या की स्किल है जिसने आपको करियर में लाइक रियली रियली बहुत हेल्प किया है, जो मतलब लोगों को भी जिसपे लाइक फोकस करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए करियर में? यार सो इंग्लिश इंपॉर्टेंट तो है ऑफ कोर्स. आई विल नॉट से पकड़ बहुत ज्यादा है अभी भी. मैं वो तो लर्निंग कर्व होता है. तो मोर यू नो, जितना ज्यादा जानते हो उतना ऐसा लगता है कि कम जानते हो, और कॉन्फिडेंस कम होता है, वो अलग बात है. But अभी भी मैं आई आस्क पीपल टू टेक अ शीट व्हेन आई हैव टू आस्क देम टू टेक अ सीट. सो सीट एश बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट ठीक है. आई थिंक व्हाट प्राइमरली स्पोक राइट कि वो कॉन्फिडेंस वाला पीस. आई थिंक लैंग्वेज भी वही है कि द मोर यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, the more you learn. It's as simple as that, right? Not being afraid to make mistakes. So I think that helped with English कि ठीक है. I always used to read, but spoken English तो तभी आती है जब आप बात करोगे, right? Unless and until you do that. So it's okay, गलती होगा देखा जाएगा, but let me speak, let me see how it आपने goes, मतलब right? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया इंग्लिश के ऊपर शुरू से? हाँ, not intentionally. It's just that I was not very conscious about making mistakes. कि होने दो, let me still speak. I'll see how it goes. हाँ, आई थिंक वो मिस्टेक जो है वो रोक देता है लोगों को. हाँ, वो धड़क होता है ना, धड़क नहीं खुलता फिर कि गलती करूंगा and people will laugh at me. But what am I going to lose, right? Even if they laugh at me, I'm still learning something with every instance, with every failure. So that this thing that I don't have to lose anything if people are laughing at me. It's okay, let me make mistakes there, it's fine. By the way, that holds true for, even what you're calling confidence, right? I don't know whether it's confidence or not. It's about the ease with which you, or the comfort that you have with making mistakes. I say that, by the way, to my teams a lot, which is ki be very very comfortable with failure. It's fine. No one really remembers that hey, you failed at 10 different things. What they will remember is that you succeeded on that 11th thing.
But that 11th thing won't happen unless and until you fail at those 10 different things. So I think that comfort with failure is there with me. Got कि it. वो डर नहीं लगता कि फेल करेंगे तो क्या होगा. Again, I think you hit the nail right on the head when you said the explorer mindset, which comes from there कि यार क्या देख कल लेंगे. करके देखते हैं क्या होगा. देख लेंगे मैं क्या पूछने होता वाला था कि आपको है. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि लाइक नॉट हैविंग द फियर टू फेल इज व्हाट इज गिविंग यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. हाँ मतलब फियर तो फिर भी रहता है बट कंफर्ट विथ फेलियर. I know I might fail, but it's Yeah, okay. yeah, I'll see what happens yeah, next. yeah, yeah. I think that is something that I have been conscious about, and that has helped also, because it helps you try out new things. Yes. Otherwise, you will never learn. Yeah. It's as simple as that. Yeah. मतलब कभी सीखोगे नहीं. Yeah. So when I told you about this AP Telangana and Rayalaseema, right? At that point of time, we also had Bihar as a territory open. Okay. I actually said no to Bihar. Okay. I would have gotten to live at home. I knew the territory very well. I know people very well, right? I knew I would have gotten like all rewards that were there to be had that year. Right? But I wanted to actually put myself in a situation where I might not be comfortable with language. I might not be comfortable with the territory, etc. etc. तो वो जो चुल है ना वो इच है कि मतलब कुछ तो करना है, करेक्ट कुछ सीखते हैं हर बार कुछ सीखते हैं मतलब सेम ओल्ड नहीं करना है मुझे. आई थिंक वो एक ग्रोथ माइंडसेट है कंटिन्यूअसली. आई थिंक कैरल डोल की किताब है माइंडसेट, जिसमें वो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करती हैं. तो जनरली आई थिंक वो ग्रोथ माइंडसेट मुझे सारे लाइक आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ विद इन द अचीवर्स की वो माइंडसेट जरूर होता है लोगों में. हाँ मतलब उसके बिना अदरवाइज you'll stagnate, right? Be it a professional, be it a student, whatever it is, you'll just stagnate. Yes. You will just never be able to move up unless you are putting yourself in uncomfortable situations. तो ये आपका एक जॉनसन एंड जॉनसन और गूगल एक बड़े लार्ज कंपनीज में थे आप, लाइक एंड और उसके बाद वहां से आपने एकदम ऐसे स्टार्टअप वर्ल्ड में ट्रांजिशन कर दिया. तो जनरली आई थिंक ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है. लोग समझना चाहते हैं कि एमएनसी की लाइफ कैसी होती है, स्टार्टअप की लाइफ कैसी होती है, और गिवन कि आपने इतने सारे साल एमएनसी में निकालने के बाद आप स्टार्टअप में आए हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप मतलब अगर कुछ प्रोज और कॉन्स अगर आप बताना चाहो स्टार्टअप के, तो वो कौन से होंगे? यार it's been what 9 months now, right? I joined in January of this year. To me, at least, I really stick to it. If I could go back, I'll take the same call again. But difficult था decision. You're right. 11 साल, established companies, established roles, role definition एकदम clear है कि ये करना है आपको, ये वाला दूसरा करेगा, ये वाला तीसरा करेगा. Like everything is set. 6 महीने के आपके goals set हैं कि 6 महीने में आपको ये deliver करना है. तो you start getting used to it, right? You start getting used to that structure, that construct. And but ना हमेशा मतलब again, so actually first things first, Google में जब the last 2-3 years, right? I was in Google Pay. So that was like a startup within Google. Yeah. Google Pay actually operated like a startup within the Google, right? So for me, they just disrupted the UPI industry in a big way. Yeah. So I actually worked on the small businesses side. वो जो Google के Pay के QR codes दिखते हैं ना दुकानों में. So that was the business that I was working on, and I was managing growth for Google Pay for business. So थोड़ा बहुत startup का flavor तो मुझे वहाँ मिल गया था, right? That how you need to be agile, how you have to be on your feet, you have to be very responsive to external factors, etc. Right? Unless you kind of really change the game, you'll not necessarily be able to grow. तो वो flavor थोड़ा बहुत मिल गया था, but it was still Google, right? So you still had to kind of go through, and Google has become a big company now. And like any big company, the risks generally outweigh the rewards, which means that they have to be very cautious about the calls that they make. ब्रांड नेम बहुत बड़ा होता है, राइट? फॉर जॉनसन एंड जॉनसन ब्रांड नेम, गूगल ब्रांड नेम, बहुत बड़ा ब्रांड नेम होता है, राइट? तो आप कुछ भी नया करोगे ना, तो पीपल विल ऑलवेज थिंक कि इसका डाउनसाइड क्या है, और डाउनसाइड हमेशा बड़ा होगा बिकॉज ब्रांड नेम इतना बड़ा है, राइट? तो दैट इज व्हाई एवरी डिसीजन हैज टू गो थ्रू hoops. Again, not the company's fault. That's how big organizations have to work, right? That is what we have experienced also in our company. That's how big companies as you have to become work. like really big, you have to be very conscious about. You have to be, right? Because there are so many other things that are riding on even the small decisions that you're making, right? तो क्या होता है कि as professionals though, what happens is multiple times your ideas kind of start getting, I mean, it takes longer to execute the same set of ideas.
That's what happens, right? Yeah. So I was getting into a zone where I like यार कुछ नया करते हैं, because ideas तो बहुत सारे हैं but कर नहीं पा रहे हैं, time ज़्यादा लग रहा है, right? Again, thankfully, Coin26 reached out, right, with this growth role that they had open, and again, exactly like Slum versus MBA, not a very easy decision to make. Yeah. My daughter Adya was on her way, Okay. so I was about to become a father. I was not sure whether it was going to be it was the right time to take something, a call like this, right? But a few things went into it. Again, like every other big decision, I actually talked to tons of people. I talked to the India head of Coinbase. I actually had a chat with multiple other folks who were in the startup world. I talked to multiple leaders in Google itself, right? How will they think about it, etc., etc. At least Google का वो benefit है. People are very transparent. You can go and have whatever conversation that you want to have. तो बहुत बातें की. I think दो तीन चीजें लगी. एक तो कि I had missed out on a few evolving industries in the early stages. तो फूड टेक का ऑप्शन था मेरे पास, ई कॉमर्स का ऑप्शन था मेरे पास, विच आई स्किप्ड. लाइक यार तीसरी बार ये गलती नहीं कर सकता. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, हमेशा से कुछ था कि यार अगेन गूगल पे में वो फेस कर रहा था, राइट, कि आइडियाज हैं बट वो एग्जीक्यूट करने में टाइम लग रहा था. तो लाइक यार what if I get that flexibility to try something at scale, right, and really see whether those ideas are powerful enough or not. So again, putting myself on the spot, right, that I don't have that safety net at the bottom, कि someone else has signed off on it, I am signing off on it, and whether it is working for me or not, right? So let me put myself on the spot and let me see whether I succeed or fail with whatever ideas that I have in my head. And the third and the most important thing was, if not now, then when. तो घूम फिर के अगर करना है तो अभी करना है. So and this is all on startup. Yeah. On crypto, I was sold. So on crypto, I was reading for about a year before that. I've been studying a lot about the technology, etc., and I knew that the technology was there to stay. That is very sure. And so I did not have doubt about the crypto world, which is a good thing, right? Because it made decisions about the startup world easier. But मुझे लगा, पता था कि यार अभी भी ऐसा नहीं है कि मतलब, but for me, I still have tremendous amount of faith on the technology. I know that the technology is there to disrupt the world. It will disrupt the world. If not now, 4 years down the line, 5 years down the line, it's evolving, but it will disrupt that world. तो वो faith था मुझे कि हाँ टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जा रही है. Then it's about कि कंपनी का क्या है. And then so this is one part where I had a chat with a lot of external stakeholders, and I talked to the entire leadership team of Coin26, and I loved the culture there. So much transparency, so much openness to being कॉल्ड आउट एज रॉन्ग, या फिर यार ये सही नहीं है, इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर हमने ये गलती किया, हाउ विल यू करेक्ट दिस मिस्टेक. अक्रॉस द बोर्ड, एवरी सिंगल, सो आई टॉक टू द फाउंडर्स एंड द कोर लीडरशिप टीम, लाइक who were there from the very beginning. All of them displayed that kind of a mindset. I was like, यार इनके साथ तो काम करने में मजा आएगा. All of them youngsters, by the way, like real youngsters. But I was like, यार इनके साथ काम करने में मजा आएगा, because one, they know the space, and two, they have actually built it from very, very early stages. So this will be fun. And then that is when I finally like, let's take the plunge, let me see how it goes. Got it. तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो आई थिंक एमएनसी जो मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक वन थिंग इज कि of course if you're in a large company things move slowly versus in a startup things move like really fast. Yeah. तो आप जो भी करना चाहो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो, जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाते हो. एनीथिंग एल्स, और कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे कि is there any other difference between startup and an MNC? I think more than jaldi implement kar pana, I think the responsiveness itself, right? The agility to respond to market forces, to respond to competition, the agility to actually grab onto a powerful idea and run with it, right? Yeah. That is very much here. इस ऐसा नहीं है कि cons नहीं है, by the way. There are, as I said, there are pros and cons to both. इसका con क्या है कि you're not, because you are hustling and you are running through things, at times you might not be very well thought through. Yeah. Right? तो उसके कारण some stages down the line you are like, oh. Yeah, I missed this. Execution पे pressure ज़्यादा होता है. How do we get this done? How do we get this done? How do we get this done? So I think exactly with the word that you said, hustle. It's the hustle culture which is there कि चीजें जल्दी try करते जाओ. Correct, exactly. But then वही है कि
दैट्स वेयर वी कम इन, राइट? या कि अगर वहां से हम यहाँ आ रहे हैं तो हाँ कुछ तो वैल्यू they're ऐड भी bringing in करना stuff, पड़ेगा ना, तो yeah, वो थॉट प्रोसेस लेके they're आना, bringing some दैट यू आर थिंकिंग थिंग्स थ्रू, yeah यू आर थिंकिंग थिंग्स इन डेप्थ एंड देन एक्चुअली कवरिंग फॉर दोज एज केसेस, राइट? hmm. सो दैट यू नो कि हाँ ठीक है, आई मीन वी आर नॉट 100% देयर, बट at even at 30-40% you at least have thought कि हाँ आगे क्या क्या बॉटलनेक्स आ सकते हैं, and how can you cover for that. yeah yeah तो but that's the fun, right? I mean, yeah yeah uh, तो सो नाउ आई थिंक गिवन कि आप क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में हो और क्रिप्टो करेंसी में मतलब काफी एक्साइटमेंट है, काफी सारी चीजें चल रही होती हैं, मोस्ट रिसेंटली तो आई थिंक वी आर सीइंग, आई थिंक द एंटायर मार्केट इज काइंड ऑफ keeps on going through like curves, right? Ups and downs. So एक बेसिक लेवल पे अगर किसी को समझना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्यों किसी को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए इस नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में, लाइक अगर आपको थोड़ा ब्रीफ देना हो क्रिप्टो करेंसी में तो आप क्या समझाएंगे लोगों को? yeah, first, I think first and foremost, thoda, it's important that before you get into it, understand the tech a bit. That is important. थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में समझ, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन क्या है, किस फंडामेंटल टेक्नोलॉजी पे ये सारी इंडस्ट्री बन रही है, राइट? एंड व्हाट आर द कोर प्रॉब्लम्स दैट इट इज सॉल्विंग फॉर. आई एम नॉट सेइंग कि उसके ऊपर पूरा वाइट पेपर वगैरह पढ़ो, बट इट्स लाइक टन्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल आउट देयर विच कैन हेल्प यू गेट दिस क्लैरिटी इन योर हेड, बिकॉज again, so that's the general grouse that I have, right? That people come into this industry saying कि यार मैं आज 100 रुपए डालूंगा, कल 1 लाख रुपए लेके लेके जाऊँ. हाँ It's not a get rich quick scheme. I mean, it should not be considered as that, right? Fundamentally, it's solving for real world problems, yeah right? Understand, even if you don't get the technology, fine. I don't expect everyone to understand कि fundamentally technology क्या कर रही है, right? But you can understand the applications of this technology. Read about the applications of the tech, राइट? कि मेटावर्स में क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या हो रहा है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सॉल्विंग फॉर, राइट? व्हाट इज इट एक्चुअली डूइंग? गेमिंग में कैसे, एक्चुअली गेमिंग तो पूरा सीन ही चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एंटायर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट इट इज सॉल्विंग? एटलीस्ट दैट विल स्टार्ट giving you idea and giving you this sense of कि where is this industry moving towards, and two, what are the things that you would want to bet on. So that is one, step one, ki application kya hai. And then once you enter into the cryptocurrency space, right, then at least start mapping that learning ki okay, agar what is this token, so what are these spaces in which this token has an application for, and then वो space में ये कहाँ कहाँ use हो रहा है, real world applications कहाँ कहाँ पर हैं इसके, right? I think there's this parallel that I generally like drawing, right? When you think about crypto, think about EV in 2007-8, yeah or think about Web 2.0 in 2097-98, या right? कुछ नहीं हो रहा था जो कि आई थिंक या 97 98 में जो इंटरनेट करेक्ट का करेक्ट जो करेक्ट. के अराउंड जो डिस्कशन था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोग कह रहे थे कि इंटरनेट जो है बर्बाद हो जाएगा 2000 में और Yeah. 2001 में, pretty much क्रिप्टो करेंसी वहीं पे है अभी. Exactly. So, like, there's a reason for it, right? Any new, and that's why I said EV also. I did not Yeah. just say internet, because कोई भी नया टेक्नोलॉजी जब होता है ना, so tech is the fundamental. उसके ऊपर build होता है उसका applications, right? Now, when you're working on that, there'll be some applications that will fall by the wayside, and there'll be some which will succeed, right? But when they succeed, they actually change the game. They change the world, right? That's Yeah, how yeah, technology works. yeah. तो अभी क्रिप्टो उस स्पेस में है जहां पर बिल्डिंग चालू हो गया है एट स्केल. You can't imagine the scale at which people are building in this space, man. It's crazy. And all of them youngsters, and that gives you that confidence कि यार ये नए लोग हैं, इनको मतलब they actually believe in this space and they want to build in this, right? So there is actually very very talented set of people who are in this space and who are building for long term. तो but that being said, 100 में कुछ होंगे जो फेल करेंगे, Of course. और वो फेल करेंगे और गिरेंगे. there'll be some who will succeed and they'll succeed, then they most probably will start Massively. Yeah. changing the world, right? Yeah. So the same cycle this industry will also go through, but that won't mean कि क्रिप्टो फेल कर रहा है, एप्लीकेशंस कुछ फेल कर रहा है, but then उसमें
So and that's where I think your understanding, the understanding that you will build, right? कि हाँ किस स्पेस पे मुझे bet लेना है, उस स्पेस में किस किस टोकन पे मुझे bet करना है, will actually end up giving you results. Yeah. So वो parallel बनाना कि आप the way you think about your normal investments, right? कि सबसे पहले तो आप diversify करते हो कि इक्विटी में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट डाल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस एज एन अनदर इंडस्ट्री वेयर यू कैन इन्वेस्ट. दैट्स नंबर वन. एंड नंबर टू, the way to invest would be again build parallels from what you have been doing in the outside world. तो blue chip companies हैं जहाँ stable results आएंगे. There are some tokens जहाँ पता है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं. They're there. So Bitcoin कहीं नहीं जा रहा है, Ethereum कहीं नहीं जा रहा है, right? I mean, so stable returns के लिए there are certain tools and mechanisms that you can use. Similarly, there will be tokens जहाँ पर alpha आने का chance है, but वो alpha जो आप चेज कर रहे हो, अंडरस्टैंड कि क्यों चेज कर रहे हो. इट शुड नॉट बी लाइक अ ब्लाइंड बेट. सब लोग मेरे से अराउंड कर रहे हैं तो शायद वो सही होंगे, इसलिए मैं भी कर लेता हूँ. Maybe go up with a much more rational approach, the way you do it in in the equity market, Yeah. or anywhere, any of your other investment Yeah. opportunities. जैसे आप कह रहे थे कि मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में कोई पेनी स्टॉक तो नहीं उठा लोगे और कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, वैसे क्रिप्टो करेंसी में भी मतलब थोड़ा सोच के सोच जाओ. समझ के इन्वेस्ट करो कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और करेक्ट. एंड देन अगर आपको बिलीफ है कि ये कंपनी, इसकी जो फाउंडर्स हैं, इनकी जो टीम है, जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो बना पाएंगे, तो फिर आप इन्वेस्ट करो. Absolutely. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप थोड़ा एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या मे बी वीसी मनी डाल रहे हो, एंड यू एक्सपेक्टिंग कि 5-10 साल में थोड़ा वो 10x हो जाएगा. तो टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो करेंसी बिल्ड कर रही है, आपको मोस्ट रिसेंट फ्यूचर में किस सेक्टर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी लेकर के आएगी? बहुत यार, ऑफ कोर्स आई थिंक again. थोड़ा, हाँ, थोड़ा बहुत ही आगे का सवाल पूछ दिया है. This will be very personal to me. मतलब Yeah, obviously it's yeah. all the entire Everybody will conversation is have, very personal, yeah. yeah. But I think if I had to bet, I think the 2 or 3 industries where the categories which I'll bet on will be DeFi is one, because DeFi में fundamental problems solve करने के लिए बहुत हैं. Finance by itself is very because again it's very very centralized and very very structured. Obviously risk भी बहुत हैं centralized नहीं होने के, I'm not saying no to that, but वहाँ problems to solve बहुत हैं, right? And I mean in terms of ease of usage, in terms of how money flows, in terms of how the core problems are that are being solved. So decentralized finance is one thing which is which at least if I had to bet, I'll kind of bet really big on. Outside of that, I think a couple of places, as I said, right, gaming में बहुत कुछ हो रहा है, and then the second one is metaverse. So I think these are 2 or 3 spaces or categories that at least I want to keep myself updated on and kind of Got it. No, I think about. completely agree. I think फाइनेंस में तो जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, आई अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसी हैज, ब्लॉकचेन हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू ऑन द फाइनेंस साइड ऑफ थिंग्स. वो नवल बोलते हैं ना, I think you would have heard his Yeah, I'm a big podcast. fan. I'm a big fan of He, Naval Ravikant. Yeah. so he says this, right, कि every technology has its use cases, Yeah. right? And the most challenging of use cases to solve is money and finance. Yes. And crypto has picked up that most challenging use case to solve first. Yeah. So if they can succeed here, every other category becomes a lot more easier to solve for. Yeah. Yeah. So Totally. it's actually a trial by fire for the industry. Yeah. Yeah. ग्रेट, थैंक यू सो मच कौटिल्य. बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे. मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं लोग? लिंक्डइन पे, ट्विटर पे? Yeah, I'm not very active on Twitter per se, but LinkedIn, etc. is there. At least I keep posting some stuff about crypto world over there. So, but yeah, I'm available at both these places. ओके, तो मैं ये सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप कौटिल्य को फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं इनसे कि क्रिप्टो वर्ल्ड में लेटेस्ट क्या हो रहा है. स्टूडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच कौटिल्य. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. It's been a lot of fun. Yeah, thank you.